कांग्रेस पार्टी एवं आम आदमी पार्टी के बीच में गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता गोपाल भाई इटालिया ने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिसोदिया और इस समय आप देख रहे हो आरजे भारत न्यूज 7। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि गठबंधन को लेकर आखिरकार जब उनसे प्रेस वार्ता में एक सवाल पूछा गया तो गोपाल भाई इटालिया ने उसके प्रति उत्तर में क्या कहा। आइए देखते हैं इस पूरी खबर में। ગઠબંધનમાં કોંગ્રેસ સાથે ગઠબંધનનો બહુ મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્નનો જવાબ સારો પ્રશ્ન છે કે જે દિવસે વાવ વિધાનસભાની ચૂંટણી પેટા ચૂંટણી આવતી હતી, વાવ બેઠક ખાલી પડી, એ સમયે વિસાવદર બેઠક પણ ખાલી હતી અને એ સમયે આમ આદમી પાર્ટી અને કોંગ્રેસ વચ્ચે નક્કી થયેલું, બેઠક થયેલી, ફાઇનલ થયેલું કે વાવ વિધાનસભાની ચૂંટણી કોંગ્રેસ લડશે, ત્યાં આમ આદમી પાર્ટીને ઉમેદવાર રાખે અને વિસાવદરની ચૂંટણી જ્યારે આવશે ત્યારે આમ આદમી પાર્ટી લડશે, કોંગ્રેસ ઉમેદવાર ઉભો નહીં રાખે. આવી વાત એ સમયે થયેલી અને અમારી વચ્ચે જે કાંઈ ડિસ્કશન ને ફાઇનલ થયેલું કોંગ્રેસ ને આમ આદમી પાર્ટી વચ્ચે, એ પ્રમાણે અમે અમારી ફરજ નિભાવી છે. અમે વાવની ચૂંટણીમાં કોઈ ઉમેદવાર ઉભો રાખ્યો ન હતો. એટલે અમને આશા છે, વિશ્વાસ છે કે જે વાત અમારી પહેલા ફાઇનલ થઈ ચૂકી છે કોંગ્રેસ સાથે, એ પ્રમાણે વિસાવદરમાં कांग्रेस उम्मीदवार उभो नहीं रखे। तो जैसा कि हमने इस पूरी खबर में विस्तार पूर्वक देखा कि जब प्रेस वार्ता के दौरान उनसे यह सवाल पूछा गया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में गठबंधन क्या है, तो गठबंधन के बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे से खुलासा किया। गोपाल भाई इटालिया ने जो कि गठबंधन के बारे में यहाँ पर प्रेस वार्ता में खुलासा किया। उनकी बात सुनकर आपके क्या विचार है और आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7 और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें। जल्दी मिलते हैं ऐसी कोई बड़ी खबर के साथ। देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।